Hello everyone, welcome back to my channel RN ArchiVision. Today is a new video wherein I would be teaching you how to use the fillet tool. ठीक है, ये सीखना काफ़ी ज़्यादा important होता है because this specifically is used in almost all the objects of your house, be it bed, be it chairs, be it any curved areas, वहाँ पे fillet use करना काफ़ी ज़्यादा important होता है. So let's get started with our video. So आज के वीडियो में we are gonna take a look over how to fillet this particular rectangle. मैंने ये randomly एक rectangle create कर लिया है यहाँ पर and I'm gonna use the fillet tool in order to fillet this particular rectangle. ठीक है, अब यहाँ इधर आप ऊपर देख सकते हो, यहाँ पर fillet का option है, यहाँ से भी आप choose कर सकते हो. ठीक है, to make your work much easy, you can actually use a keyword, a shortcut keyword, okay, which is going to be F followed by a space bar. ठीक है, एंड यहाँ पर फिलेट का ऑप्शन आपके पास ओपन हो गया है एंड यू ऑल्सो हैव लाइक मल्टीपल ऑप्शंस ओवर हियर लाइक अनडू, पॉलीलाइन, रेडियस, ट्रिम या मल्टीपल. सो इसमें से आई एम गोना वर्क राइट नाउ ओवर द रेडियस. ठीक है, मैं यहाँ रेडियस सेलेक्ट करूँगी एंड आई एम गोना गिव अ रेडियस ऑफ अराउंड लाइक 18. ठीक है, एंड आई एम गोना क्लिक द स्पेस बार एंड उसके बाद आई एम गोना सेलेक्ट 2 लाइन्स इन ऑर्डर टू मेक अ फिलेट. ठीक है, सो आई एम गोना क्लिक दिस लाइन एंड दिस लाइन. ठीक है, ये लाइन मैं सेलेक्ट कर रही हूँ तो एज यू कैन सी देयर इज लाइक अ कर्व व्हिच इज बीइंग फॉर्म्ड एंड ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है व्हेन यू आर वर्किंग ओवर योर बेड डिज़ाइंस. ठीक है, बेड के पास कर्व्स होते हैं. ठीक है, उस पर भी काम आएगा. इफ़ यू आर मेकिंग लाइक सम चेयर्स जहाँ पर कर्व्स है वहाँ पर हेल्पफुल होगा. इफ़ यू आर वर्किंग ओवर द स्टेयरकेस रेलिंग्स, ठीक है, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा. ठीक है, तो ये फिलेट यूज़ करना इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न. अगर फॉर एग्जांपल मुझे ये फिलेट निकालना है, आई वांट टू गेट दिस बैक टू नॉर्मल, तो मैं क्या करूँगी, आई एम अगेन गोना यूज़ द कीवर्ड F फॉलोड बाय द स्पेस बार. आई एम गोना गो विद द रेडियस एंड यहाँ पर मैंने पहले 18 क्लिक किया था, राइट? यहाँ पर आप देख रहे हो 18 मैंने यूज़ किया था प्रीवियसली. नाउ आई एम गोना क्लिक 0. Okay, and gonna click spacebar. I'm gonna select these 2 lines and it's back to normal. So that's how you actually use the fillet tool. If you haven't taken a look over my other videos, AutoCAD videos, Revit videos, SketchUp videos on my channel, aap jaake dekh sakte ho. It's something very helpful. It's something which I have explained in detail and it's definitely going to be very helpful for you all. So do take a look over it. Do share it with your friends as well. So it's very important, very helpful and you know, ये सारी चीज़ें important होती है सीखने के लिए लाइफ में. Thank you so much for watching. Do like my video, share it with your friends, do subscribe my channel and I'll be back with a new video. Up till then, take care and bye bye.